Hi friends, welcome back. I'm Vikas, medical student at Sri Atal Bihari Vajpayee Medical College and Research Institute. Okay, in this video, I'm going to explain some of the doubts which I have been asking in my comment section about the Dakshina and Dakshina interview and all. In this video, I'm going to explain the main question students are asking in the comment section and the daily routine things taking place in the Dakshina Valley. That and all thing I will be explaining in this video. So watch complete video and gain some knowledge before going to Dakshina. Okay. Firstly, if you come to the students who are in waiting list, लाइक हिंदी में बात करता हूँ ताकि आपको अंडरस्टैंड हो जाए इजीली. लाइक मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर फ्रॉम नॉर्थ इंडिया वाचिंग दिस वीडियो, सो आई विल बी टॉकिंग इन हिंदी. जैसे कि आपको उधर 300 लाइक इन नीट बैच दे विल बी सेलेक्टिंग 300 स्टूडेंट्स. ओके, 300 लोगों को सेलेक्ट कर दिया होगा एंड जेई में भी 300 स्टूडेंट्स को सेलेक्ट कर दिया होता है. और उधर जाने के बाद उधर का बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन रहता है दक्षिणा में. ओके, लाइक they are not allowed to keep their phones and all, like and they have to trim their hair cleanly. That all things, there will be strict rules and regulations will be there. So and पेरेंट्स को महीने में एक बार ही कॉल कर सकते हैं. और आप एक बार उधर आ गया तो वापस जाने के लिए आफ्टर योर नीट और आफ्टर योर जेई एडवांस ओनली दे शुड गो. एंड मोस्ट ऑफ द serious rules and regulations will be there. So most of the students after like 1 week or 15 days they will start to go back to their homes. Okay, after listening to the, and some of the students can't understand the offline teaching and all, so they will be leaving Dakshina campus within 7 to 15 days. So वो लोग बाहर आने के बाद उस प्लेस को भरने के लिए these waiting list students will be there. Okay, मैक्सिममली लाइक हमारा बैच में भी अराउंड 50 लोग बाहर जा चुका था. लाइक दे हैव left the campus within 7 to 15 days. Even after 1 month also they will be leaving. Okay, so around 50 लोग जा चुका था, इसलिए 50 लोगों का उधर ऑक्यूपाई हो चुका था. वेटिंग लिस्ट जो भी वेटिंग लिस्ट में है वो लोग उस प्लेस को ऑक्यूपाई कर दिया. ओके, in the same way even in JE batch also happens. So the waiting list is been added. Okay, like maximum chance will be there for selection in the waiting list. Wait and watch what. Okay, next if you come to the daily routine of the campus, like आपको 5:30 या 6 o'clock में उठाया जाएगा और मॉर्निंग पीटी किया जाएगा अप टू 6 आई थिंक. 5:30 से 6:15 तक किया जाएगा. आफ्टर दैट you can go and fresh up in your respective rooms, and different times will be allotted for the taking breakfast. Like for boys, neat boys and JE boys, it was like 7 to 7:30. After 7:30 we have to move to our respective classes and all. And in that classes, like JE will be in separate batch and neat will be in separate batch. Some classrooms will be there for JE and neat batch. For girls and boys there will be separate classes. Like for boys it will be on morning session like 7:30 to 1:30, and for girls it will be from 1:30 to और गेम्स वगैरह भी रहता है. लाइक संडेज का मॉर्निंग सेशन में गेम्स वगैरह खेल सकते हैं. मॉर्निंग संडे एंड ऑल क्लासेस विल नॉट बी देयर, सो ऑन संडे वी कैन प्ले गेम्स एंड ऑल, फुटबॉल, वॉलीबॉल, क्रिकेट एंड ऑल. एंड रूटीन वगैरह आपको समझ में आया होगा. लाइक बॉयज़ एंड गर्ल्स separate places for eating food and all will be there. And communication between girls and boys will be almost nil, so most of the students will come out of the Dakshina if they are not manageable there. Okay, I think this video is useful to you. Thanks for watching. If not subscribed, please subscribe and go move to Dakshina Valley. In next video I will be explaining about the what are the things you should take for Dakshina campus. Okay, on the day of admission. Okay, I will be explaining in next video. Okay, thanks for watching. Please subscribe and move to Dakshina Valley if you have been selected. All the best. Okay, bye, good night.